हेलो गाइस, आई एम शुभम ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम मंडेलियन जेनेटिक्स के PYQ सॉल्व करेंगे। So how the questions come from this area, we will see. Very simple questions. So first question is, a cross is made between a pure breeding plant having red colored flowers with pure breeding plant having white colored flowers. Okay, pure breeding plant ये क्वेश्चन में एक हिंट है, राइट, एंड सिंगल कैरेक्टर, red flower and white flowers. Okay, single character. So this is a such a cross is called as monohybrid cross. Right? We have to understand the question properly. Like pure breeding plant and single character, red and white color. This is a hint, and that is monohybrid cross. Second question: in Drosophila melanogaster males, homologous chromosomes pair and segregate during meiosis, but क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर। ओके, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता लेकिन पेयरिंग और सेग्रीगेशन होता है। विच स्टेज ऑफ मियोसिस द सेग्रीगेशन ऑफ टू एलील्स ऑफ जीन टेक प्लेस इन दिस इंडिविजुअल। मतलब सेग्रीगेशन कौन से स्टेज में होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्रॉस ओवर डज नॉट ऑकर, एंड द आंसर इज एनाफेज 1। ओके, सेग्रीगेशन एनाफेज से रिलेटेड है, राइट। एनाफेज स्टेज में सेग्रीगेशन होता है। सो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता लेकिन पेयरिंग और सेग्रीगेशन हो रहा है। दैट विल टेक प्लेस इन द एनाफेज 1। नाउ द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड इन ड्रोसोफिला मेल्स वेयर नो रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स। सी, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन इज सेम। So no recombination occur. Segregation of two alleles of a gene occurs at which stage of cell division? Okay, segregation कौन से stage में होता है? When there is no recombination. So again answer is anaphase 1. Right? We have to remember this point. When recombination or crossing over does not occur, anaphase 1 में segregation होता है alleles का। Same question यहाँ पे related है heterozygous individual में if a crossing over has occurred. Okay, understand, इस क्वेश्चन में दिया है क्रॉसिंग ओवर ऑकर हुआ, मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ है between the gene locus and the centromere of the chromosome. The segregation of the alleles of the gene will occur during meiosis at which stage? Okay, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब सेग्रीगेशन एनाफेज 2 में होता है। Option 3, anaphase 2. Okay, so this is we have to remember when crossing over not occur, anaphase 1 segregation take place, and when crossing over occur, segregation takes place in anaphase 2. Now this question, if all four gametes are formed in equal probability, then arrangement of chromosome at metaphase 1 of meiosis will be very easy। मतलब यहाँ पे we know parental, these are the parentals, okay, and ये जो बीच में है those are recombinants, so all are equal probability। then how should be the arrangement? Very easy, see this first only, okay, यहाँ पे A होगा capital A, then small a, capital B, small a, B, and this will then combine with this, right, and this will again combine with, okay, so this is the answer, option 1। मंडेल के जो लॉज है, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देन डोमिनेंस, सेग्रीगेशन कैसे होता है, all this we have discussed in the genetics, right? Which of the following representation of chromosomal arrangement in meiotic metaphase 1 best explains the law of independent assortment? Easy है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है,
परसेंटेज ऑफ सेल्स विद अरेंजमेंट वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे 100% ये तो नहीं होगा, राइट? वी वांट 50-50। अगेन वी हैव टू नोट all the combinations should be present, parental as well as recombinants। तो इसमें एक ही प्लेस पर है प्रॉपरली 1। So this is a capital A, capital B. We got this. Then here small a, small b, right? This. And here capital A, small b. And here small a, capital B. So first case. Next question. Two siblings who inherit 50% of the genome from the mother and 50% from the father show lot of phenotypic difference, right? Phenotypic difference बहुत होता है। 50% genome inherited from mother and 50% from father. Which of the following events during gametogenesis, मतलब गैमेट फॉर्मेशन के वक्त कौन से इवेंट से ये सब पॉसिबल हो रहा है? Okay, the parents will maximally contribute to the difference. What events? Which events? So basically, option 3, independent assortment. Law of independent assortment gives rise to variation, right? And maximum contribution is that only. So we can say maximum contribution ये एक hint है. Okay. Why recombination can be the answer? Because recombination से crossing over होता है and recombination maximally contribute नहीं करता. Okay, it contributes but not maximally. Maximally contribution is independent assortment. Again, here is the same question. Mutation is essential for genetic variation, right? Genetic variation के लिए mutation important है. Which one of the following events can lead to variation? मतलब variation के लिए कौन से event responsible है? Amongst the gametes produced by males of Drosophila melanogaster. अभी यहाँ पे दिया है क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर males, राइट? क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर तो रिकॉम्बिनेशन तो नहीं होगा एंड द आंसर विल बी 4, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 4, इंडिपेंडेंट assortment, right? Now of the following meiotic events, formation of synaptonemal complex, crossing over, arrangements of chromosome at equatorial plate at metaphase 1, separation of chromatids at anaphase 2, which one lead to variation? Okay, मतलब variation के लिए क्या responsible है? Which of the events? So first of all, crossing over तो होगा ही होगा, right? B will be the reason for variation, crossing over, and arrangement of chromosome at equatorial plate. ओके, सेपरेशन तो नॉर्मल है, सेपरेशन तो होगा ही, सेपरेशन से वेरिएशन नहीं होता, राइट? मेन इज क्रॉसिंग ओवर है, ओके, बी होना चाहिए, राइट? बी ओनली, नॉट बी एंड सी। सेपरेशन ऑफ अ क्रोमैटिड नॉर्मल है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जीन्स है ए बी सी, कंट्रोल 3 फेनोटाइप्स which assort independently. A plant with genotype heterozygous है, selfing. Okay. What is the probability for progeny which show the dominant phenotype for at least one of the phenotypes controlled by genes A, B, C? Okay, मतलब dominant phenotype का probability we have to find for at least one, right? At least one. Now this question is little tricky. We can say at least one मतलब यहाँ पे dominant condition होना चाहिए. This, this, right? Either this alone
or this alone, or combined also we can consider, right? Combined also we can consider. Three genes hai. How to solve this? Easy hai. Let's see on the new slide. Three genes are given. Okay, A, B, C. अभी जो रिसेसिव होगा, this will be complete recessive, right? And we know this will be 1 upon 16. 1 upon 64. Okay, when two genes are there, 16 होते हैं. 1 upon 64. So dominant will be 1 upon 64 minus 1. Okay, ये dominant होगा. That is 63 upon 60. Right. So your answer will be option 3, 63 and 63 upon 64. Same type of question है repeated. Three independently assorting genes, okay, known to control coat color in mice. The genotype of few of the coat color is given below. Genotype, agouti, black, and albino. Okay, what we have to find? Expected frequency of albino in the F2 progeny from crosses of pure black with albino of the genotype so and so. Okay, F2 progeny में probability we have to find. Easy है ये भी बहुत. Albino is recessive. हमें बस इस पर ध्यान देना है. Right? C. Okay. And क्वेश्चन में दिया है F2 प्रोजेनी में प्योर ब्लैक विथ अल्बिनो सो एंड सो. ओके, प्योर ब्लैक जो होगा दैट विल बी कैपिटल CC, राइट, एंड स्मॉल cc एज पर दिस गिवन जेनोटाइप. तो इसमें F1 है ये, दिस इज F1 जनरेशन. सो F2 विल बी capital small heterozygous condition. अभी when we will do the selfing, ओके, सेल्फिंग करने के बाद CC जो होगा that will be 1 upon 4. Okay, so the option will be first 1 upon 4. Got it? So easy. So that's it for this video. There are more questions from this topic we will do in the next video. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Share this video with your friends. Like this video, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.